नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ है उसका 5 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एज ऑफ एलिजाबेथ, जिसे एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है या फिर शेक्सपियरियन एज और द एज ऑफ शेक्सपियर भी समटाइम्स कहा जाता है। एलिजाबेथ की अगर बात करें तो ये क्वीन बनी थी आफ्टर एडवर्ड एंड मैरी इन 1558 और इसका रेन चला था 1603 तक। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इंग्लैंड को रूल किया है वो क्वींस ने ही किया है, जैसे कि एलिजाबेथ जो भी करंट एलिजाबेथ महारानी थी, वो अभी जिनकी डेथ हुई है कोई एक ही साल पहले, एंड देन क्वीन विक्टोरिया एंड आफ्टर दैट एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ की एज को द गोल्डन एज भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्हेन एलिजाबेथ केम इनटू पावर ना, एट दैट टाइम पॉलिटिकल सिनेरियो एंड द अदर सिनेरियो वाज नॉट गुड ऑफ इंग्लैंड्स टाइम। ओके, इंग्लैंड हैज़ ऑल्सो गॉट डिफीटेड फ्रॉम द अदर पार्टीज़। तो इस तरीके से जब देखा जाए तो उस टाइम पे इंग्लिश की सिचुएशन जो थी वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वैसे भी स्कॉटलैंड और आयरलैंड में अपने तरह के फाइट्स चले हुए थे, है ना। तो पॉलिटिकल सिनारियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट देन शी केम इनटू द पावर, शी एस्टेब्लिश्ड ऑल द थिंग्स एंड देन दिस एज इज केम टू नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो यू कैन फाइंड कि उसने अच्छा काम किया था। तो चलिए दोस्तों, अभी आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि एलिजाबेथ एज जो थी वो गोल्डन एज कही जाती है इंग्लिश पीरियड की। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी एलिजाबेथन एज की। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, और अगर आप मास्टर्स या ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द एज ऑफ एलिजाबेथ 1558 to 1603. Now, Milton said about Elizabethan age that we suddenly see England, a noble and puissant nation, rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks. As I told you na earlier, the political scenario and the other scenarios were not good, but then when she came into power, उसके बाद उसने पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से लगा कि कोई इंसान जो बहुत लंबे समय से सोया हुआ है उसने अपने लॉक्स को फाइनली हिलाया है, एंड देन अभी वो राउज हो गया है एक तरह से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो अभी काफ़ी लंबे समय के बाद, सोने के बाद अभी फाइनली वो जाग गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन किया है हमारे मिल्टन ने एलिजाबेथन एज को। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं एलिजाबेथन एज की। सबसे पहले रिलीजियस टॉलरेशन वाज देयर, सोशल कंटेनमेंट वाज देयर, एंथुसियाज्म वाज देयर एंड द ड्रामा वाज देयर। रिलीजियस टॉलरेशन की अगर बात करें तो व्हेन शी केम इनटू पावर ना, एट दैट टाइम नॉर्थ वाली जो साइड थी वो कैथोलिक्स थे और जो साउथ इंग्लैंड था वो सारा वो सारा ही के सारा प्रोटेस्टेंट था। एंड देन शी केम इनटू पावर, शी ब्राउट बोथ द पार्टीज टुगेदर। ठीक है, उसने उनको डिवाइड करने की कोशिश नहीं करी, इनको दोनों को साथ लेके आए। और उसके बाद स्कॉटलैंड और आयरलैंड जो थे उनका भी अपने तरीके की रेफॉर्मेशन चली हुई थी रिलीजन को लेके, और उनको भी उसने साथ लेके आई वो। एंड देन दे मेड अ यूनियन ऑफ द ट्रीटी, जिससे कि ब्रिटेन बना था। ठीक है, स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी इसके अंडर आ गए थे, जो कि पहले से काफ़ी लंबे समय से फाइट चली हुई थी। वो मुद्दा जो सेटल्ड नहीं हो रहा था वो एलिजाबेथ ने आके फाइनली सेटल कर दिया था। ठीक है, नाउ सोशल कंटेंटमेंट वाज देयर, क्योंकि इस एज में जो फाइट्स वगैरह थी वो बंद हो गई थी और लोगों को अच्छा काम भी मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी। जो भी जितने भी व्यापारी थे उनको बोला गया था कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। पैरिशेस जो भी थे वो देवर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर एंड जो वेल्दी पीपल थे उनको बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरो ताकि पुअर्स की हेल्प किया जाए। ठीक है, तो सभी को अच्छे तरीके से खाना वाना वगैरह जो भी था मिल रहा था वहाँ पे एलिजाबेथ पे ना, काम मिल रहा था एलिजाबेथन एज में। सो दैट वाज वाई कि लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज अपर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी बोथ वर कंटेंट ड्यूरिंग हर एज। ठीक है, एंड देन एंथुसियाज्म वाज देयर। ठीक है, इस टाइम पे इस एज में लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। एक्चुअली एक बात ये भी थी एलिजाबेथन एज की, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी था कि एलिजाबेथन एज में जब किसी को सज़ा मिलती थी, मौत की सज़ा मिलती थी, तब उन्हें ये बोला जाता था कि अगर आप मौत की सज़ा नहीं चाहते तो ऐसे किया जाएगा कि आपको एक समुद्री यात्रा पे भेजा जाएगा और आप जो है
किसी और वर्ड को फाइंड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। एंड देन इफ़ यू फाइंड दैट, इफ़ यू फाइंड एनी आइलैंड, तो आप उसमें अकेले रहोगे, एंड देन उसमें जो भी आपकी कमाई वगैरह होगी वो आप हमें दोगे वापस आके, ठीक है। तो ऑब्वियसली किसी को अगर मौत मिल रही है तो वो बोलेगा ठीक है मेरे को भेज दो, कोई बात नहीं, समुद्र यात्रा पे अकेले भेज दो, कोई बात नहीं, मर ही जाऊंगा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे भी तो मरने ही वाला हूँ, ठीक है। एंड देन दैट्स हाउ पीपल स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, दे फाउंड न्यू आइलैंड्स, दे फाउंड न्यू यू नो new earth, new people, new areas. That's how they found India, that's how they found America. ओके इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे आइलैंड को फाइंड किया, और इससे उनको पैसा भी आने लगा और उनकी एम्प्लॉयमेंट्स भी ज़्यादा बढ़ गई, और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने जो है तरक्की करी बाद में, ठीक है। और अगर फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक्स है एलिजाबेथन एज का वो था ड्रामा। देखिए ड्रामा को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ड्रामा वाज एवरीवेयर देयर, शेक्सपियर वाज देयर, यूनिवर्सिटी विट्स वाज देयर, बेन जॉनसन वाज देयर, सो मेनी ड्रामेटिस्ट, सो मेनी ग्रेट ड्रामेटिस्ट एलिजाबेथन एज हैज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसीलिए गोल्डन एज को ड्रामा की वजह से ही किया जाता है, क्योंकि पोइट्री उतनी ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे, हालांकि पोइट्री भी हिट थी, लेकिन कंपेयर टू ड्रामा पोइट्री का उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था लोगों में। शुरुआत हालांकि इसकी पोइट्री से होती है, एंड देन लेटर ऑन इट डेवलप्ड इनटू ड्रामा एज, बट ड्रामा मतलब that was the most सक्सेसफुल थिंग ड्यूरिंग एलिजाबेथन आई वुड से, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोस एज भी, इसी एज में प्रोस भी लिखा जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर प्रोस एज भी कहा जाता है इसे, ठीक है। लेकिन ड्रामा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सबसे पहले हम पोइट्स की बात करेंगे एलिजाबेथन एज की, क्योंकि पोइट्री केम फर्स्ट, सो वी विल डिस्कस अबाउट पोइट्स फर्स्ट, ठीक है। हमारे जो फर्स्ट पोइट थे वो थे एडमंड स्पेंसर, जिनका जन्म हुआ था 1552 में, एंड 1599 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड ही हैज़ बीन फेमसली सेलिब्रेटेड बाई चार्ल्स लैम्ब एज पोइट्स पोइट। अकॉर्डिंग टू वेन जॉनसन, ही डाइड फॉर want of bread. And Joshua Reynolds has also said that he was born poor, he lived poor, and he died poor. Stephen Spender, a postmodern writer, has written a poem on Spencer, that is Spencer Oak, ठीक है। स्पेंसर ओक एक ट्री था जो इसके किल कोलमैन वाला जो घर था, जो किला था, उसके बाहर एक ओक ट्री था जिसके नीचे बैठ के इसने फेरी क्वीन लिखी थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। नाउ हिज वर्क्स इंक्लूड फेरी क्वीन, 6.5 बुक्स, मस्ट रीड बुक है इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट ना एंड अदर एग्जाम रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, सो यू मस्ट रीड फेरी क्वीन। एमोरिटी और सोनेट्स टू हिज एलिजाबेथ, दैट इज देयर। द मैरिज हिम्न इज देयर, दैट इज एपिथेलोमियन। एपिथेलोमियन वो सॉन्ग होते हैं जो शादी के पहले दिन जो हस्बैंड है वो अपने अपनी वाइफ को वो सॉन्ग डेडिकेट करते हैं, ठीक है, या फिर वो पोइम डेडिकेट करते हैं। अब जो लोग एपिथेलोमियन जो उतने अच्छे राइटर नहीं होते हैं, जो एपिथेलोमियन नहीं लिख पाते हैं, तो व्हाट दे डू, दे यूज टू परचेज पोइट्री फ्रॉम एडमंड स्पेंसर और अदर पोइट्स लाइक दैट, ठीक है। तो उस तरीके से वो उनसे पोइट्री खरीदते थे और वो अपनी वाइफ को सुनाते थे, उसे प्रोथलेमियन कहा जाता था, ठीक है। नाउ शेफर्ड्स कैलेंडर 1579, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ना पड़ेगा आपको। कोलिन क्लाउड कम्स होम अगेन, इसकी भी आपको समरी देखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। द विजन ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड, इसकी भी हल्की सी समरी देख लीजिएगा, ये स्टेट ऑफ आयरलैंड के बारे में है, ये ओनली प्रोस वर्क है जो एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। इसमें उसने बात करी थी कि किस तरीके से आयरिश जो रेवोल्यूशनरी हैं दे वर प्लॉटिंग अगेंस्ट एलिजाबेथ, ठीक है। एंड देन व्हाट दे डिड, व्हाट स्पेंसर डिड, ही लीक्ड ऑल देयर प्लान्स टू एलिजाबेथ, ठीक है। एंड देन आयरिश पीपल दे सेड कि हमें छोड़ दो, मतलब इसको, ठीक है, हम अब आपको अटैक नहीं करेंगे, हम आपकी स्लेवनेस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, बट गिव स्पेंसर बैक टू अस। एलिजाबेथ वेरी स्मार्ट, सो शी इज़ लाइक कि टेक स्पेंसर इनटू कस्टडी एंड गिव इट टू आयरलैंड, ठीक है। तो इसी वजह से स्पेंसर वहाँ से भाग गया, एंड देन कुछ लोगों का मानना था कि वो जंगल में ही रहा, कुछ लोगों का मानना था कि वो मर गया, इसीलिए लिखा गया है बेन जोन्स के द्वारा भी कि ही डाइड फॉर द वांट ऑफ ब्रेड। एंड जोशिया रेनॉल्ड ने इसलिए कहा था कि ही वॉज बोर्न पुअर, ही लिव्ड पुअर एंड ही डाइड पुअर, बिकॉज उसको वो तो धोबी के कुत्ते की तरह हो गया था, ना घर का ना घाट का, क्योंकि आयरिश से था वो, और आयरिश के लोगों के अगेंस्ट ही उसने प्लॉट कर दिया, और इसीलिए उससे मारा गया, ठीक है। एंड व्हेन he was assigned by Elizabethan age to go to Ireland to see that the things are good there. At that time he wrote Colin Cloud comes home again, and Colin Cloud is Spencer here, and he is going to his home, that is Ireland. And then he has also written Mother Hubbard's Tale, Daphne-ida, Elegy on Douglas Howard, and The Tears of the Muses. You just need to remember the just the right title of these poems, ठीक है। And Astrophil and Elegy on the Death of Sydney is also there. Astrophil, you need to read the summary of this
poem, although you can read the text also. That is good, that is very beautiful. Okay, इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो पोइट हैं वो है फिलिप सिडनी. फिलिप सिडनी की जो बर्थ है वो हुआ था 1554 में एंड इनकी डेथ हो गई थी 1586 में. एंड ही हैज़ बीन कॉल्ड द एपिटम ऑफ मैनकाइंड. इन हिंदी वी कॉल इट मानवता की मिसाल. Now when he fought in the battle of Jetfen, after getting wounded, he offered his water to the enemy also, saying, "Thine need is greater than mine." Okay, that's why he has been called the epitome of mankind. ठीक है, सुनो, देखो जंग में वो भी घायल है, लेकिन उसके जो साथी वाला उसका जो एनिमी है वो भी घायल है. एंड देन ही गेव हिज ओन वाटर to him, saying that thine is greater than mine. तुम्हारी जरूरत मुझसे ज़्यादा, because he was much more wounded than him. Okay, and then his works include Astrophel and Stella. It's a collection of songs and sonnet addressed to Lady Penelope Devereux, to whom Sydney has once been betrothed. ठीक है, betrothed हुआ था लेकिन शादी नहीं हुई थी इसकी. ठीक है, इसीलिए Astrophel and Stella. Stella is that star which is never achievable. Okay, so that's why he has written Astrophel and Stella. Arcadia or the Countess of Arcadia or the New Arcadia, this is another poem. And Apology of Poetry 1595, he has been written, and then it is generally called the Defense of Poesy, and it appeared in an answer to a pamphlet by Stephen Gosson called The School of Abuse 1579. देखिए उसने ओरिजिनली तो स्टीफन गोसन को रिप्लाई किया था, बट वो जब उसको रिप्लाई करता है तो एक्चुअली में वो रिप्लाई कर रहा है प्लेटो को. ठीक है, तो ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रिप्लाई टू प्लेटो फॉर हिज इन हिज अपॉलजी फॉर पोइट्री दैट वाज पब्लिश्ड इन 1595. एंड देन आफ्टर सिडनी वी हैव थॉमस सैकविल. He was born in 1536 to 1608. Sackville wrote in collaboration with Thomas Norton the first English tragedy, that is Ferex and Porrex, also called गोरबोटक. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, इसकी समरी आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि फर्स्ट प्ले है हमारा. ठीक है, एंड देन वी हैव जॉर्ज चैपमैन 1559 to 1634. माइकल ड्रेटन इज देयर, was born in 1563 to 1631, and he is the Layamoon of the English age and vastly more scholarly than his predecessors. Ballad of Agincourt and Charge of the Light Brigade are his famous poems. If you want, you can read the summary of these two poems. Okay, now comes the age of dramatists. Like English dramatists are there. The first English dramatist, actually, before them there was no English dramatist. So dramatists came into this age, in Elizabethan age. Now the origin of the drama, that is periods in the development of the drama. First of all came the religious period, that is miracle and mystery plays were written during that period, during the religious period. Ludes de Sancta Catharina was performed in Dunstable about 11110, is the earliest miracle play. And there were 4 cycles of play actually. The Chester cycle has 25 plays, the Wakefield 30, the Coventry 42, and the York 48. In second period we have the moral period of the drama, that is best known of the moralities is Everyman. Other well known moralities are the Pride of Life, Hiker's Corner, and Castle of Perseverance. Everyman is important, you can read the summary of Everyman, that has been asked in UGC net. Okay, and then best known authors of moralities are John Skeleton, who wrote Magnificence and probably also the Necromancer, and Sir David Lindsay 1490 to 1555, the poet of the Scotch Reformation. These are not important, just remember for the sake of memory only. And then third we have the interludes. Now the famous interlude is the 4-piece written by John Haywood 1497 to 1580. That is not clear actually, and you must read the summary of 4-piece. Actually this has been asked in UGC net. And then a contest of wit between a pardoner, a palmer, and a peddler, and apothecary. Another interesting interlude is the play of the weather. That is also important, you can read the summary of this play also. Okay, so the contest that was in 4-piece, it was like who will tell the greatest lie. Okay, and it's a very good debate, I would say. So you must read the 4-piece as well as the play of the weather. And in 4 part we have the artistic period of the drama. So the first true play in English with a regular plot divided into acts and scenes is probably the comedy Ralph Roister Doster. It was written by Nicholas Udall, master of Eton, and it was acted by his schoolboys around 1556. You must read the summary of this play, I would say.
And the next play, Gammer Gurton's Needles, published in 1562, is a domestic comedy representing the peasant class. You must also read the summary of this book also. And Our First Tragedy, Gorboduc, was written by Thomas Sackville and Thomas Norton, as I mentioned earlier, and it was acted in 1562, only 2 years before the birth of Shakespeare. It is remarkable not only as our first tragedy but as the first play to be written in blank verse. That thing you must remember, okay, along with the summary of this play. Now we have Shakespeare's predecessors in the drama. Who was Shakespeare's predecessor? They were university wits. Okay, so first of all we have university wits like John Lilly, who was born in 1554 to 1606. He developed pernicious literary style called Euphuism. He wrote Euphues, the Anatomy of Wit, 1579, and Euphues and his England, 1580. Actually question has been asked from this thing also, so you must read the summary of both these plays. And then we have Thomas Kidd, 1557 to 1594, Thomas Lodge, 1557 to 1625, Robert Greene, 1558 to 1592, George Philip, 1558 to 1596, and then Thomas Nash, 1567 to 1607. Okay, now Christopher Marlowe, 1564 to 1593. Guys, you must know the names of the university wits, their date of birth, and in chronological order, because every time you will get at least one question from university wits only. And then Christopher Marlowe's works are Tamburlaine, 1587, basic summary you must read. The Massacre at Paris, 1593. Diddo, Queen of Carthage, 1594. You must read the summary of this play also. Edward II, 1594. You must read the summary of this play also. Dr. Faustus, 1604. Okay, read this play. Actually, this is very important. The Jew of Malta, 1633. Read a detailed summary of Jew of Malta, because that is also very important. And now we have our most important author of Elizabethan age, and it is none other than William Shakespeare. William Shakespeare was born on 1564 to 1616. Now, when Johnson says of him, I love the man and do honor his memory, on this side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Robert Greene, one of the most popular playwrights of the time, who attacked Shakespeare in a pamphlet called A Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Remittance. Now, works of Shakespeare has been divided in 4 parts. First part, that was called as early experiment. In this period, he wrote Venus and Adonis, Rape of Lucrece, 1594. These are the long poems. And then he also wrote Titus Andronicus, Henry VI, 3 parts, 1592-91. And then Love's Labour's Lost, 1590 published. Comedy of Errors, 2 Gentlemen of Verona, 1591 to 1592 written. Richard III, 1593 written. Richard II, King John, 1594 to 1595. You need to read only Titus Andronicus. If you want to, you can leave that thing also. Okay, if you don't want to read it, you can leave it. That is not much important. Okay, so nothing is important to read actually in this period. You can just read a basic summary of Love's Labour's Lost if you want to. Otherwise, if you want to leave it, you can leave it. And then Titus Andronicus, you can leave this part also, I guess. If you want to read, you can read it. Okay, in second period we have development period. And then in this period he wrote Romeo and Juliet, Midsummer's Night Dream, 1595, Merchant of Venice, Henry IV, first part, 1596, Henry IV, second part, Mary Weaves of Windsor, 1597, Much Ado About Nothing, 1598, As You Like It, Henry V, 1599. Okay, you must read Midsummer Night's Dream. Okay, the summary of this play. Merchant of Venice, you can read this play also, that is very important. And As You Like It, that is also very important. Okay, now in third period we have Maturity and Gloom. In third period he wrote sonnets, that was published in 1600, Twelfth Night 1600, and Taming of the Shrew, Julius Caesar, Hamlet, Troilus and Cressida, 1601 to 1602, All's Well That Ends Well, Measure for Measure, 1603, Othello, 1604, King Lear, 1605, Macbeth, 1606, Antony and Cleopatra, Timon of Athens, 1607. Okay, in third period you need to read the summary of Twelfth Night, Taming of the Shrew, Julius Caesar, Hamlet, Troilus and Cressida, and then you must read the summary of Othello also, King Lear also, Macbeth also, Antony and Cleopatra also,
and you can also read a brief summary of Timon of Athens as well. I mean to say that you need to read the summary of all the books actually that are there in almost all the books that are there in third period, that is entitled as Maturity and Gloom. In fourth period, that is known as Late Experiment, we have Coriolanus Pericles 1608, Cymbeline 1609, Winter's Tale 1610 and 1611, The Tempest 1611, Henry VIII, that is unfinished. In fourth period, you can read the summary of Coriolanus and Pericles and as well as the summary of Tempest. You can also read the summary of Cymbeline. Okay, that is important, I would say. Okay, now some basic facts about Shakespeare. Actually, Shakespeare borrowed materials for his plays from Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland and on North's translation of Plutarch's famous Lives. Shakespeare's sonnets 154 in numbers are addressed to a man who is his friend and to a woman who disdained his love. Goethe says, I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. Now, after Shakespeare, we have one most important writer, that is Ben Jonson, who was born in 1573 and died on 1637. Sometimes he is also mentioned as born in 1572 in some of the books. Now, Ben Jonson fought bravely for two things, that is to restore the classic form of drama and to keep the stage from its downward course. In his first great play, Every Man in His Humour, 1598, Shakespeare acted one of the parts. On his grave was laid a marble slab on which the words, "O rare Ben Jonson," was his sufficient epitaph. His main works include Every Man in His Humour, Cynthia's Revels, The Poetaster, Volpone or the Fox, The Alchemist, Epicene or the Silent Woman. Okay, now you need to read the summary of Cynthia's Revels. You can also read the summary of The Alchemist, Epicene or the Silent Woman, and you must read the work that is Volpone or the Fox. That is very important, very, very important, I would say. Okay, now we have Beaumont and Fletcher. Now, their joint famous works are Philaster, Cymbeline and Griselda, The Maid's Tragedy. You don't need to read any of the books. Although you can read The Maid's Tragedy, that is important. The Maid's Tragedy, you can read the summary of The Maid's Tragedy. Other books you can avoid. And then John Webster is there, The White Devil, published 1612. The Duchess of Malfi, published 1623. You must read the summary of The Duchess of Malfi, that is important. And then we have Thomas Middleton, 1570 to 1627, The Changeling, Woman Beware Woman. Okay, you need to read the summary of Woman Beware Woman. You can also read the summary of The Changeling also. And then we have Thomas Heywood, 1580 to 1650, A Woman Killed with Kindness, The Fair Maid of the West. Okay, you need to read the summary of A Woman Killed with Kindness. You can leave The Fair Maid of the West. Just remember the title only. Thomas Dacre, 1570 born and death is not known. The Shoemaker's Holiday, Old Fortunatus. Okay, you need to read the summary of the detailed summary, I would say, the detailed summary of The Shoemaker's Holiday. That is very important. And then Philip Messenger is there, 1584 to 1640. John Ford is there, 1586 to 1642. And Shirley is there. Okay, now we are done with the poet as well as the dramatist. Now we should move on to the prose writers. Now, Francis Bacon is the most important prose writers of Elizabethan age, that I would say that. And then he was born in 1561 and died on 1626. He was the son of Sir Nicholas Bacon, Lord Keeper of the Seal, and of the learned Anne Cook, sister-in-law to Lord Burleigh, greatest of the Queen's statesmen. As a child, he was called by Elizabeth her little Lord Keeper. His works include The Advancement of Learning, Novum Organum, The Insaturatio Magna, The New Atlantis, De Spentia Veterum, and The History of Henry VII. You don't need to read any of the works, that are not important, just remember the titles only. And then we have Richard Hooker, born 1554 and died 1600. Sir Philip Sidney is there, 1554 to 1586. And then Sir Walter Raleigh is there, 1552 to 1618. John Fox is there, 1516 to 1587. Camden and Knox are there. Richard Hakluyt, 1552 to 1616. Samuel Purchas, 1575 to 1626. थॉमस नॉर्थ 1535 to 1601. सो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 5 द एलिजाबेथ एज, द एज ऑफ एलिजाबेथ और एलिजाबेथन एज फाइनली एंड्स हियर. आई होप कि आपको जो वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी. कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो जानने के लिए, समझने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे.